सर मेरी केमिस्ट्री की हाई अचीवर्स क्लास है आज। सर हाँ जी। सर मुझे बताना था कि मेरी ना आज वो केमिस्ट्री की हाई अचीवर्स क्लास है एट 7:20 सर, तो मुझे आज 7:20 पे जल्दी लीव करना पड़ जाएगा। ओके ओके। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। So after quadratics and simple coordinate geometry के बाद now we can start the coordinate geometry of circle, or you can say equation of circle. हाँ जी, आती है आपको? मीन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आजकल जो पेपर में आ रही है वो सर्कल के साथ मिक्स होकर आ रही है, तो अभी सर्कल वाले जब क्वेश्चन करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी दोबारा भी बीच में आएगी। ओके जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। What is equation of circle? Standard equation of circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Like every equation has a standard form. Linear equation की standard form is y is equal to mx plus c. Quadratic equation की standard form is y is equal to ax square plus bx plus c. So just like linear quadratic, हाँ जी, so just like linear and quadratic,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी सॉरी सर्कल की भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एंड दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन जब आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें आपको पता होता है कि व्हाट डज दिस m रिप्रेजेंट, व्हाट डज दिस c रिप्रेजेंट। सो यहाँ पे ये h k एंड r ये क्या है? सो h k are the coordinates of center of circle. We know every circle has a center. उस center के जो coordinates होंगे वो h k होंगे, and r is the radius of the circle. मीन अगर हमारे पास एक ये सर्कल हो, एक स्केच है, इस सर्कल का एक सेंटर होगा, उस सेंटर एक पॉइंट होगा जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के होंगे, उसका द एक्स कोऑर्डिनेट होगा इट विल बी h and its y coordinate will be k, and the radius of the circle is r. So अगर आपके पास लिखा हो x minus h whole square, so the coordinates x coordinate will be positive h, means sign change हो रहा है, and if you have y minus k, then y coordinate is positive k. तो इसमें अगर आप देखें साइन चेंज हो रहा है, जिस तरीके से इन क्वाड्रेटिक्स में स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताने में साइन चेंज होता था, तो इसमें भी रूल यही है कि अंडर द स्क्वायर जो टर्म है आप उसको जीरो पुट करते हैं, सो यू गेट x इज इक्वल टू द h। मीन वो तो शिफ्ट होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि उसके साइन चेंज कर रहे हैं। सेम गोज फॉर y. So examples, if you have x minus 3 whole square plus y plus 2 whole square is equal to 4. G, Manal, what are the coordinates of the center? Positive 3, negative 2, and radius is 2. Radius के लिहाज 4 नहीं होना चाहिए? Yes, वो r square था, तो ये 4 is basically r square, so इस नंबर का square root will be the radius. If we have x plus 2 whole square plus x, not x, y plus 3 whole square is equal to 7. Abdullah, center and radius. Minus 2 minus 3, and radius is under root 7. ऐसे ही ना, 4 का स्क्वायर रूट लिखा था ना आपने 2, ये तो r स्क्वायर है, so 7 is equal to r square. So what is r? Under root 7, square root 7. If we have x minus 5 whole square plus y square is equal to 3. Rida, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड 0, सो y स्क्वायर के साथ बेसिकली ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हुआ, दिस इज y plus 0 होल स्क्वायर या y minus 0 होल स्क्वायर, सो y coordinate of the center is 0 and radius is square root 3.
x square plus y square is equal to 1. G. Samin, what are the coordinates of the center? Sir, 0 and 0. 0 and 0, and radius is? Under root 1. And under root 1 is? Under root 1 is 1. So radius is 1. Sorry, sir, I did not mute. X square minus 3 is equal to 5 minus y square. Ibrahim Jan, center and radius. So it's gonna be 0, 0 and square root 8. जी ऐसे ही है ना? तो जस्ट आपको अरेंज करना है, आप y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पे इधर शिफ्ट करेंगे, दैट विल बिकम पॉजिटिव y स्क्वायर, और फिर -3 उधर शिफ्ट हो जाएगा, सो 3 + 5 8. So square root 8 is the radius and center is 0. ओके, अभी हमने जितने भी मैंने केसेस दिए इन सब में ऑलरेडी स्क्वायर कंप्लीट हुआ था और आपको जस्ट देके सेंटर और रेडियस बताना था. लेकिन अगर स्क्वायर कंप्लीट ना हुआ सो फर्स्ट हमने स्क्वायर कंप्लीट करना होगा. इसीलिए मैंने इस टॉपिक को क्वाड्रेटिक्स के बाद रखा है ताकि हम स्क्वायर कंप्लीट करना वहां सीख चुके हैं. नाउ द क्वेश्चन इज x square plus y square minus 6x plus 8y is equal to 0. We want to find the coordinates of the center and also the radius. डायरेक्ट भी आपको समझ आ सकता है, लेकिन हम ऐसा करते हैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जब तक स्क्वायर कंप्लीट नहीं करेंगे वो हमारे पास फॉर्म नहीं बनेगी. सो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मीन एक्स स्क्वायर वेरिएबल्स, एक्स वेरिएबल इकट्ठा होना चाहिए. फर्स्ट आई शुड राइट एक्स स्क्वायर माइनस 6x and y square plus 8y is equal to 0. So x square minus 6x का सेपरेटली स्क्वायर कंप्लीट करें, y square plus 8y का स्क्वायर कंप्लीट कीजिए. So if you complete the square for x square minus 6x, it will become x. Half of 6 is 3. So x minus 3 whole square. And outside, the square of 3 will be subtracted. Then y square plus 8y, it will become half of 8 is 4. So y plus 4 whole square. And outside, 4 square will be subtracted. So x minus 3 whole square, the constants should be shifted on the other side. कौन से constant? ये 3 square और 4 square. 3 square is 9 minus 9. 4 square is 16 minus 16. So minus 9 minus 16 minus 25. On the other side, it will become positive 25. Now we can tell the coordinates of the center. Coordinates of the center, Samra. And radius is 5. तो सेंटर अगर पूछे तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं इसका हाफ करके. रेडियस अगर पूछे, सॉरी सेंटर, इसका सिंपली आप हाफ करके आप बता सकते हैं, और साइन डेफिनेटली वो चेंज कर लें.
वो भी होता है बिल्कुल। ओके लेकिन सिलेबस में आपके पास कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म मेंशन की हुई है, वो हमें आनी चाहिए। स्क्वायर कंप्लीट करने वाला ये हमें आना चाहिए। ओके नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर minus 6y is equal to 10x minus y square. Is this the equation of circle? Yes, it is. आप इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस फाइंड करें बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। डन। सो रीअरेंजमेंट फर्स्ट आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया होगा एक्स स्क्वायर के साथ -10x and positive y square -6y is equal to 0. So आपके पास x square -10x स्क्वायर कंप्लीट किया तो वी गॉट x -5 होल स्क्वायर -5 स्क्वायर। ये चाहें तो -5 स्क्वायर डायरेक्ट दूसरी साइड पे +5 स्क्वायर लिख दें, प्लस y minus half of 6 is 3 -3 square is equal to 0. So we have x minus 5 whole square plus y minus 3 whole square is equal to -5 square minus 3 square is 25 plus 9 34. So the center is 5 3 and radius is square root 34. ओके जी ठीक हो गया यहां तक। ओके इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो सर्कल की इक्वेशन है ये कौन से पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती है? सॉरी, द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आप में से अक्सर लोगों के माइंड में थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है कि सर्कल और सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसको सेटिस्फाई करेगी। ऐसा नहीं है। ये जो सर्कल की इक्वेशन है बेसिकली सर्कल की कर्व की इक्वेशन है। मीन उस कर्व की जो सर्कमफ्रेंस बन रहा है, जो कर्व बन रही है वो उस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये उनको सेटिस्फाई करती है। मीन दिस सेटिस्फाई दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट। इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर, कर्व के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं ये उनको सेटिस्फाई करेगी। सो अगर कोई पॉइंट इनसाइड या आउटसाइड है दैट कर्व, दैट इक्वेशन विल नॉट सेटिस्फाई दोज पॉइंट्स। ओके आपके सिलेबस में मेंशन है कि knowledge of the symmetrical properties of circle is expected. मीन आप लोगों ने ओ लेवल में आईजीसीएसई में एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल की थी, याद है एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल? आपके सिलेबस में उसने कंटेंट में मेंशन किया हुआ है कि वो नॉलेज होना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। और प्रीवियस पास्ट पेपर में अगर आप देखें सो
कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी यूज होनी करनी पड़ती है जो कि वहां पे आपने ओ लेवल, सो ओ लेवल एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स आपको आनी चाहिए। सो डू यू नो दोस प्रॉपर्टीज? सब याद है प्रॉपर्टीज? जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सी थी एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल? ये सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी थी, दफा गो थ्रू करते हैं। ऑफ सर्कल मैं प्रॉपर्टीज नहीं लिखूंगा, जस्ट रिवाइज करेंगे उनको एक डायग्राम के थ्रू। फर्स्ट वन, कोई एक प्रॉपर्टी किसी को याद है तो कोई भी बता दे, एनी वन प्रॉपर्टी। रिदा कोई प्रॉपर्टी याद है एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल? कॉर्ड वाली, जैस सॉरी, कॉर्ड से रिलेटेड में बहुत सी प्रॉपर्टीज है। परपेंडिकुलर जो है वो तो टेंजेंट वाली होती है। हाँ, वो कॉर्ड भी एक बनती है। चले जी, सेंटर है ये अगर सेंटर है, अगर मैं कोई भी एक कॉर्ड ले लूं, सपोज दिस इज अ कॉर्ड, कॉर्ड बना होना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने, व्हाट इज अ कॉर्ड? सर्कल के कोई से टू पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम कॉर्ड कहते हैं। जैसे ये मैंने ड्रॉ किया, इस कॉर्ड से एंगल्स सेंटर पे भी बन सकते हैं और सर्कमफ्रेंस भी बन सकते हैं। सो अगर इस कॉर्ड से इफ आई ड्रॉ वन एंगल एट सेंटर, आई एम रिप्रेजेंटिंग ओ विद सेंटर, and from the same chord if I draw angle at circumference, so from the same chord one angle is being made at center and other angle is being made at circumference. What's the relation between these two angles? Yes, कौन सा डबल होता है, सेंटर वाला या सर्कमफ्रेंस वाला? सेंटर। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट circumference. Mean if the angle at circumference is x, then angle at center will be twice of x, mean 2x. और प्रॉपर्टी हमने क्या की? There was one property about diameter. What was that? Diameter की एक प्रॉपर्टी थी, क्या थी? Makes 90 degree with the circumference. Diameter is a line which passes through center. Say this is diameter. डायामीटर भी एक कॉर्ड है। डायामीटर के एंड पॉइंट से जितने भी एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनेंगे दे विल बी 90। इवन यहां पे भी जो एंगल बनेगा दैट विल आल्सो बी 90। सो डायामीटर मेक्स 90 डिग्री एट सर्कमफ्रेंस, कहीं पे भी बनाए। सो दोनों डायामीटर के जो एंड पॉइंट से एंगल ओरिजिनेट होके सर्कमफ्रेंस पे बनेगा दैट एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। सारी प्रॉपर्टीज जो जो हमने वहां की हम सारी की तो लिखेंगे, कोई भी आ सकती है, लेकिन मैं आपको एंड पे बताऊंगा जो ज्यादा प्रॉपर्टीज ए लेवल में एएस में यूज हो रही हैं। थर्ड, if I say this is a chord, from this chord how many angles can be made at circumference? Like I made this one angle, how many angles can be made at a circumference? Okay, let's make another. ये मैंने एक और बना लिया, ये मैंने एक और बना लिया। So how many angles can be made from one chord? ये chord है, this is a chord. इस chord से we can make infinite angles at the center, at the circumference. So what's the property? What's the relation between these angles? All the angles are
equal. So all the angles at the circumference from the same chord are equal. इसको आप कहते थे angles in the same segment are equal. So if this angle is x, this is also x, and this is also x. Right? ये 3 प्रॉपर्टीज होगी और हमने क्या किया था वहां पे जी किसी को कोई और प्रॉपर्टी याद है Third is angles in the same segment are equal. All the angles on the circumference, they are equal. There was one property about cyclic quadrilateral. Do you remember that? What was that? सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनती है if all the 4 points of the quadrilateral lie on the circumference, if all the 4 points of the quadrilateral lie on the circumference, then that quadrilateral is called cyclic quadrilateral. लेकिन प्रॉपर्टी क्या थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की? What's the property? Yes, the opposite angles are supplementary. Opposite angles add up to make 180 degree. Opposite angles का sum 180 degree होता है. So अगर ये angle है 100, then Abdullah, what will that angle be? 80. So if this is 85, then this angle will be 95. So opposite angle का sum 180 होता है. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Okay, fifth is a property about tangents. So the tangent and radius are, what's the property? The tangent and radius are perpendicular. तो जिस पॉइंट पे कोई लाइन कर्व के साथ टेंजेंट होगी, अगर वहीं पे रेडियस ड्रॉ किया जाए, then radius and tangent are perpendicular. ये जो मैं आप लिखने लगूं, ये कोई प्रॉपर्टी तो नहीं थी, लेकिन ये एक फैक्ट जरूर था. एक्सटर्नल पॉइंट से ये एक्सटर्नल पॉइंट है. इस एक्सटर्नल पॉइंट से हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन दैट सर्कल? 2 tangents. And what is special about those 2 tangents? They are equal in length. So इन दोनों टेंजेंट की लेंथ is equal. और equal chords are equidistant from center.
क्या मतलब इसका? अगर सपोज एक ये कॉर्ड है and say here is another chord. If the length of these two chords is equal, अगर मैं कहूं कि ये कॉर्ड 5 सेंटीमीटर है और ये कॉर्ड भी 5 सेंटीमीटर है, इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है। अगर टू कॉर्ड्स इक्वल हुए तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल आल्सो बी equal. Mean perpendicular distance, this distance and this distance will also be equal, and vice versa is also true. Mean कि अगर टू कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल हो, इसका मतलब वो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। इसको एंड वाइस वर्सा भी साथ लिख लीजिए। सेवेंथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि ए ओ लेवल में तो इतनी ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन एएस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये एक सेंटर हो विच इज ओ, this is a chord, the property is perpendicular line from center bisects the chord. क्या मतलब? अगर सेंटर से एक लाइन आए जो कि परपेंडिकुलर हो, सुनिए प्लीज, सेंटर से अगर एक लाइन कॉर्ड को परपेंडिकुलरली कट कर रही है, इफ इट इज परपेंडिकुलर इट मींस इट विल बाइसेक्ट इट। अगर ये परपेंडिकुलर हुई तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट द कॉर्ड मीन इट विल डिवाइड द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर वो लाइन परपेंडिकुलर हुई तो इट विल डेफिनेटली बाइसेक्ट द कॉर्ड, एंड अगेन आई वुड से वाइस वर्सा। व्हाट इज द ऑपोजिट? अगर सेंटर से एक लाइन किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, इट मींस दैट लाइन इज परपेंडिकुलर। ये बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी यूज होने वाली है आपके यहाँ पे। सो सेंटर से एक लाइन जो कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट कर रही है, इट मींस इट्स परपेंडिकुलर। अगर वो परपेंडिकुलर है, इट मींस कि इट इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड। सो इन प्रॉपर्टीज में से ये सब प्रॉपर्टीज हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा यूज होने वाली हैं वो अगर देखें तो टेंजेंट प्रॉपर्टी, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, और ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी सेवेंथ। जी समीन। Sir, I have to leave, like I told you. Yes, you can go. Thank you, sir. So perpendicular, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं वो प्रॉपर्टी, और ये लास्ट जो प्रॉपर्टी है ये सबसे ज्यादा यूज होगी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ सर्कल में। बाकी भी ये डायमीटर की भी समटाइम्स यूज हो जाती है। इन बाकी ऐसा नहीं कि कह सकते कि वो नहीं होगी, कुछ भी यूज होती है, डायमीटर वाली भी अक्सर आ जाती है, हमें आनी सारी चाहिए। ओके, कुछ और कॉमन बातें जो हमें पता होनी चाहिए। Sir, जी आमना। sir, जो property the exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle, वो वाली property नहीं use होती है इसके अंदर? वो नहीं यूज होगी। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि वो प्रॉपर्टी जो लोग आईजीसीएसई से करके हैं, आईजीसीएसई के सिलेबस में थी। जो लोग ओ लेवल से करके हैं, ओ लेवल के सिलेबस में वो प्रॉपर्टी ही नहीं थी। सो देखा है तो ओ लेवल वाले भी यही पढ़ रहे हैं। सो वो प्रॉपर्टी अगर नहीं भी आती तो क्वेश्चन के
विदाउट दैट प्रॉपर्टी भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। और वो मैंने इसलिए लिखी क्योंकि वो ओ लेवल ने तो की नहीं है, ओ लेवल वालों ने की है, तो ओ लेवल वालों ने नहीं की तो फिर वो ए लेवल में एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आना चाहिए। अच्छा, कुछ कॉमन सी बातें जो इस टॉपिक के लिए हमें चाहिए होती हैं, जो कि हमें पता है वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन की क्या खास बात होती है, कोई उसके कोऑर्डिनेट्स की क्या खास बात होती है वर्टिकल लाइन। जी, वर्टिकल लाइन के कोऑर्डिनेट्स के बारे में व्हाट डू वी नो है अब्दुल्ला, क्या स्पेशल बात होती है कोऑर्डिनेट्स के बारे में? सॉरी, ऑलमोस्ट राइट, ऑल द टाइम जीरो। अगर वो y एक्सिस हुआ तो डेफिनेटली y is जीरो, बट आई सिंपली रिटन वर्टिकल कोऑर्डिनेट, वर्टिकल लाइन। अब वो वर्टिकल लाइन कुछ भी हो सकती है। जी समरा, कुछ बताना है? वर्टिकल लाइन का x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, ऐसे ही है ना। मीन अगर मैं आपको ये बताऊं, चलें ये मैं x एक्सिस y एक्सिस बना दूं, सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। इस पॉइंट का दिस पॉइंट इज से 2। सो आप बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 2 एंड y कोऑर्डिनेट 1। इसका x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 2, x coordinate 2, y coordinate 3, x coordinate 2, y coordinate 3. If it is a vertical line, its x coordinate will not change. और exactly if it is, अगर वो vertical line y axis है तो then x is 0, वो तो हमने coordinate geometry में भी किया है। So if it is a vertical line mean x coordinate will stay same. And what about if it is horizontal line? Yes. So horizontal line में y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। मीन y कोऑर्डिनेट अगर यहां पे सपोज 1 है, सो दिस इज 1 0, सॉरी 1 0 0 1, दिस इज 0 1 2 1, ये पे पॉइंट होगा 4 1, दिस विल बी 6 1, सो हॉरिजॉन्टल लाइन में y कोऑर्डिनेट इज अनचेंज एंड वर्टिकल लाइन में x कोऑर्डिनेट इज अनचेंज। नेक्स्ट, सपोज ये एक सर्कल है, its x-intercept is 1 and 5. This is say 2. जी, इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताइए।
मैंने एग्जैक्ट कुछ नंबर नहीं सोच के नहीं लिया, रैंडम दे दिया। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर? इट इज 3 2। y कोऑर्डिनेट तो मैंने क्वेश्चन में दे दिया था, इट्स 2। आपको x कोऑर्डिनेट कैसे पता चला कि इट्स, आपने 1 और 5 के मिडिल में फाइंड कर लिया, कैसे कि इट्स मिडिल है ये? सो लग रहा है कि वो इक्वल होगा, या कोई रीजन भी है? सॉरी, इट्स लाइज ऑन द एक्स। देखिए एक बात तो कंफर्म लग रही है कि कुछ चीजें ऐसी है कि हमें लग रहा है कि यार ये ऑब्वियस है कि 1 और 5 के मिडल में है, लेकिन वो ऑब्वियस क्या चीज है? ये बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर 7 है, जो भी लास्ट प्रॉपर्टी की है। अगर आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, एंड हाउ डू वी नो इट्स अ परपेंडिकुलर? ये बात कि मैंने वो एक्स एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल होता है, मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। So अगर वो 1 और 5 है तो it means that middle point will be the midpoint because it will bisect the chord. So ये point होगा इसका 3, और अगर ये point 3 है तो center के coordinates is 3 2। Okay, last question आज का। एक सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 1 and radius is 3. Find the equation. In fact, write the equation. Find this में करने वाला कुछ नहीं है। Write the equation of circle. जी नाफे बताइए, what is the equation of that circle? एक सेकेंड। जी नाफे कुछ पता चला? जी सर, x+4 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जी ऐसा ही है, ये सबको पता चल गया। वी नो इट इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो इनके हम नॉर्मली साइन चेंज कर देते हैं और रेडियस का यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई है। कल हम इसके एक्चुअली क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऐड होने से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितनी डिफिकल्ट हो जाती है। अल्लाह हाफिज।